वेलकम टू लर्निंग अड्डा। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के 30 केयरफुली डिजाइन बैंक एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हर सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन पर फॉर्मेट और अप्रोच समझेंगे और फिर कंसेप्ट्स को एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हाइलाइटेड सेगमेंट को ग्रामर, इडियम, पैरेललिज्म और कंटेक्स्ट के बेसिस पर टेस्ट कीजिए। जो रिप्लेसमेंट पूरे सेंटेंस को करेक्ट बनाए यूज सिलेक्ट कीजिए। अगर ओरिजिनल सेगमेंट ऑलरेडी करेक्ट हो तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड चूज कीजिए। क्वेश्चन 1. Sentence improvement. The committee's recommendation was that every exception is recorded in a register accessible to the auditors. Please examine the choices shown on the screen and select the best answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Recommendation के बाद that clause में mandative subjunctive use होता है। Passive construction में base form भी recorded चाहिए, is recorded नहीं। इसलिए option B correct है। Question 2. Sentence improvement. Had the Treasury disclosed the contingent liability earlier, investors might have assessed the merger differently. Please examine the choices shown on the screen and select the best answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option E. Had plus subject plus past participle inverted third conditional बनाता है। Earlier disclosure और different assessment दोनों unreal past situations है। Original construction बिल्कुल correct है, so option E. Question 3. Sentence improvement. The revised protocol precludes any employee to authorize a payment that benefits a related party. Please examine the choices shown on the screen and select the best answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option A. Preclude का correct pattern है preclude someone from doing something. इसलिए to authorize को from authorizing से replace करना होगा। Option A grammar और meaning दोनों preserve करता है। Question 4. Sentence improvement. So opaque the assumptions underlying the forecast were that even its authors could not reproduce the result. Please examine the choices shown on the screen and select the best answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Sentence जैप so plus adjective से start होता है, तो subject verb inversion required होता है। Correct order so opaque were the assumptions है। Therefore option B correct है। Question 5. Sentence improvement. The lender would rather write off the residual amount than extending a facility whose recovery costs exceed its value. Please examine the choices shown on the screen and select the best answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Would rather के बाद bare infinitive आता है और than के दोनों sides parallel होने चाहिए। Write off के साथ extend use होगा, extending नहीं। Correct answer option C है। Error detection में sentence 4 labeled segments में divided है। Subject agreement के साथ pronoun case, modifiers, parallel structure और idiomatic usage भी check कीजिए। अगर पूरा sentence correct हो, तो no error select कीजिए। Question 6. Error detection. Whomever the panel believes suppressed the memorandum will be asked to testify under oath. Please inspect the labeled parts and the choices displayed on the screen, then select the correct answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer.
अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option A. The panel believes parenthetical interruption है। Pronoun suppressed का subject है, so subjective form whoever चाहिए, whomever नहीं। Error segment A में है। Question 7. Error detection. The quality of the disclosures, rather than the number of annexures, determine whether the filing is genuinely informative. Please inspect the labeled parts and the choices displayed on the screen, then select the correct answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Main subject quality singular है। Rather than से आने वाला phrase verb को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए determine की जगह determines होगा। Error segment C में है। Question 8. Error detection. The revised code seeks not merely to penalize delayed reporting but also improving the reliability of disclosures. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Not merely or but also से joined elements grammatically parallel होने चाहिए। Not merely to penalize के parallel but also to improve आएगा, improving नहीं। इसलिए error segment C में है। Question 9. Error detection. Neither the repeated assurances nor the subsequent clarification has dispelled the uncertainty surrounding the provision. Please inspect the labeled parts and the choices displayed on the screen, then select the correct answer. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option E. Neither nor construction में verb nearest subject से agree करता है। Nearest subject clarification singular है, so has correct है। बाकी sentence भी grammatically sound है। Answer no error है। Question 10. Error detection. Rarely, if ever, the central bank has intervened in the currency market without first explaining the exceptional circumstances. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Rarely जैसे negative frequency adverbial को front position में रखने पर auxiliary subject से पहले आता है। The central bank has intervened की जगह has the central bank intervened होगा। Error segment B में है। Double fillers में दोनों blanks को separately नहीं, एक connected sentence के रूप में solve कीजिए। Grammar और collocation के साथ contrast, cause, tone और logical consistency check करके ordered pair choose कीजिए। Question 11. Double fillers. The regulator's apparently blank concession was, in practice, so heavily blank that few lenders could use it. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option A. Apparently appearance और actual effect का contrast set करता है। Concession generous दिख रही थी, लेकिन condition से heavily qualified यानी restricted थी। इसलिए option a correct pair है। Question 12. Double fillers. Because the minutes were deliberately blank, the board managed to blank a decision rather than resolve the disagreement among directors. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Equivocal का meaning deliberately ambiguous है। ऐसे minutes disagreement को resolve नहीं करते, defer यानी postpone कर देते हैं।
rather than resolve भी इसी कॉन्ट्रास्ट को कंफर्म करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 डबल फिलर्स द रिकवरी इन डिपॉजिट्स remained blank. A temporary tax refund had blanked the underlying weakness in household savings. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Temporary tax refund ने डिपॉजिट्स को स्ट्रॉन्गर दिखाया, लेकिन हाउसहोल्ड सेविंग्स की वीकनेस एक्चुअली चेंज नहीं हुई। रिकवरी इल्यूसरी थी और रिफंड ने वीकनेस को मास्क यानी कंसील किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 डबल फिलर्स rather than blank the anomaly as a clerical error, the auditor chose to blank its origin across 3 reporting systems. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option A. Rather than do easy rejection और careful investigation को contrast करता है। ऑडिटर ने अनोमली को क्लेरिकल एरर कहकर डिसमिस नहीं किया, उसने ओरिजिन ट्रेस किया। ऑप्शन ए इज द ओनली कोहेरेंट पेयर। क्वेश्चन 15 डबल फिलर्स द गवर्नर्स रिमार्क्स वर सफिशिएंटली ब्लैंक टू calm markets yet sufficiently blank to preserve room for a policy reversal. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. मार्केट्स काम करने के लिए रिमार्क्स रियश्योरिंग होना चाहिए। फ्यूचर रिवर्सल का रूम प्रिजर्व करने के लिए उन्हें नॉन कमिटल यानी किसी फिक्स्ड प्रॉमिस से फ्री रहना चाहिए। ऑप्शन बी दोनों पर्पसेस सैटिस्फाई करता है। वर्ड यूसेज में फोकस वर्ड के सिर्फ फैमिलियर मीनिंग पर डिपेंड मैट कीजिए। हर स्टेटमेंट में उसका प्रिसाइज सेंस, कॉलोकेशन और ग्रामेटिकल रोल चेक करके एग्जैक्टली करेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन 16 वर्ड यूसेज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स इन विच क्वालिफाई इज यूज्ड करेक्टली। स्टेटमेंट 1 The analyst qualified her optimistic forecast by noting that commodity prices remained volatile. Statement 2 only enterprises with audited statements qualify for the concessional rate. Statement 3 this certification qualifies its holder to conduct insolvency valuations. Please evaluate the answer combinations shown on the screen and select the correct one. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option E. स्टेटमेंट 1 में क्वालिफाई का मीनिंग क्लेम को कैवियट से लिमिट करना है। स्टेटमेंट 2 में एलिजिबिलिटी मीट करना और स्टेटमेंट 3 में क्रेडेंशियल का अथॉरिटी देना। तीनों यूसेजेस करेक्ट है, सो ऑप्शन ई। क्वेश्चन 17 वर्ड यूसेज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स इन विच एग्जैक्ट इज यूज्ड करेक्टली। स्टेटमेंट 1 The note did not specify the exact date on which the guarantee would lapse. Statement 2 the delay may exact a heavy toll from firms dependent on short-term credit. Statement 3 a notary exacted the copy before it was submitted to the tribunal. Please evaluate the answer combinations shown on the screen and select the correct one. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Statement 1 में exact adjective है, meaning precise. Statement 2 का idiom exact a toll means serious cost impose करना. Statement 3 में document को authenticated या verified कहा जाएगा, exacted नहीं। Option C correct है। Question 18 word usage identify the statements in which temper is used correctly. Statement 1 the chair tempered her criticism with an acknowledgement of the team's limited resources.
Statement 2. The components are tempered to withstand abrupt changes in temperature. Statement 3. The ministry tempered the filing deadline by another fortnight. Please evaluate the answer combinations shown on the screen and select the correct one. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option B. Statement 1 में temper criticism का meaning criticism को moderate करना है. Statement 2 metallurgy का valid sense use करता है. Deadline को extend या relax किया जा सकता है, temper नहीं. Therefore option B. Question 19. Word usage. Identify the statements in which discharge is used correctly. Statement 1. The valuer discharged a revised estimate after inspecting the collateral. Statement 2. Trustees must discharge their duties without favoring one class of beneficiary. Statement 3. The remaining debt was discharged after the court approved the settlement. Please evaluate the answer combinations shown on the screen and select the correct one. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option D. Estimate को issue, prepare या revise किया जाता है, discharge नहीं. Duty discharge करना means fulfill करना और debt discharge होना legal obligation extinguish होना है. Statements 2 and 3 correct है, so option D. Question 20. Word usage. Identify the statements in which material is used correctly. Statement 1. The omitted covenant was material to the lender's decision. Statement 2. The clarification material the committee's assessment of the bid. Statement 3. The researchers archived their interview material after publishing the report. Please evaluate the answer combinations shown on the screen and select the correct one. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option C. Statement 1 में material means significant or relevant. Statement 2 में material को verb की तरह incorrectly use किया गया है, materially altered चाहिए. Statement 3 में source content वाला noun sense correct है. Option C. Sentence rearrangement में पहले independent opening identify कीजिए. फिर however, therefore जैसे connectors, this जैसे references, repeated ideas और cause effect flow को link करके unique sequence बनाइए. Question 21. Sentence rearrangement. Arrange P, Q, R and S to form a coherent paragraph. P. This asymmetry matters because inability to pay and unwillingness to pay predict very different future behavior. Q. Lenders must therefore distinguish a temporary absence of liquidity from a deliberate refusal to repay. R. Conventional scoring models often treat every missed installment as equivalent evidence of distress. S. A solvent borrower may, however, miss a payment because income arrives after the contractual due date. Please compare the possible sequences displayed on the screen and choose the coherent order. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option A. Our conventional model introduce करता है. S however के साथ contrasting borrower case देता है. P का this asymmetry inability और unwillingness के difference को refer करता है. Q as distinction का practical consequence conclude करता है. Correct order R S P Q है. Question 22. Sentence rearrangement. Arrange P, Q, R and S to form a coherent paragraph. P. Some districts display high household savings even though banks there report unusually low deposit balances. Q.
Such households consequently appear to have neither assets nor a history of disciplined saving. One explanation is that distrust of formal institutions pushes families towards cash, gold and rotating savings groups. Their recorded financial footprint thus understates both their resources and their capacity to service a loan. Please compare the possible sequences displayed on the screen and choose the coherent order. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option A. P puzzle introduce करता है. R का one explanation as puzzle का आंसर देता है. Q में such households आके formal institutions avoid करने whale families को रेफर करता है. S recorded data और actual capacity का contrast conclude करता है. Order P R Q S है. Question 23. Sentence rearrangement. Arrange P, Q, R and S to form a coherent paragraph. P. Officials initially assumed that a single disclosure form would help all applicants compare loan costs. Q. The revision improved comprehension without reducing the amount of information supplied. R. Field tests instead showed that first-time borrowers overlooked charges embedded in dense explanatory notes. S. In response, designers moved the total repayment figure to the first page and relegated technical definitions to an appendix. Please compare the possible sequences displayed on the screen and choose the coherent order. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option C. The initial policy belief देता है. A evidence से us belief को challenge करता है. S का in response us evidence के बाद redesign show करता है. Q का the revision इसी redesign को refer करके outcome देता है. Correct order P R S Q है. Question 24. Sentence rearrangement. Arrange P, Q, R and S to form a coherent paragraph. P. These gains may be diffuse, but excluding them would bias the evaluation against preventive programs. Q. Yet it does not follow that the initiative created no value, since fewer fraud attempts also reduce anxiety and investigative costs. R. Critics noted that the awareness campaign recovered less money than it cost to run. S. That objection is valid if recovered funds are treated as the program's only benefit. Please compare the possible sequences displayed on the screen and choose the coherent order. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option D. Our criticism introduce करता है. S का that objection as criticism को refer करके limited concession देता है. Q yet के through broader conclusion reject करता और indirect benefits introduce करता है. P के these gains वही benefits है. Order R S Q P है. Question 25. Sentence rearrangement. Arrange P, Q, R and S to form a coherent paragraph. P. Conversely, an unusually quiet month may make a fragile portfolio appear sound merely because losses have not yet surfaced. Q. Rewarding branches solely for low current defaults seems to align managers with prudent lending. R. But the measure can encourage them to renew troubled loans so that delinquency remains temporarily invisible. S. Avoiding these errors requires indicators that track both present arrears and changes in the underlying quality of credit. Please compare the possible sequences displayed on the screen and choose the coherent order. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option A. Q attractive strategy introduce करता है. R but के साथ उसका immediate danger बताता है. P conversely opposite distortion add करता है.
एज दीज एरर्स से दोनों केसेस को समराइज करके सोल्यूशन कंक्लूड करता है। करेक्ट ऑर्डर QRPS है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑथर की थीसिस, की डिस्टिंक्शंस, एग्जाम्पल्स का पर्पस और टोन आइडेंटिफाई कीजिए। आंसर आउटसाइड नॉलेज से नहीं, पैसेज में स्टेटेड या नेसेसरली इम्प्लाइड एविडेंस से चूज कीजिए। अब पैसेज सुनिए। When lenders assess applicants with no formal credit history, they often describe the problem as a shortage of data. The phrase is misleading. Many such applicants leave abundant traces through rent payments, mobile wallet transfers and purchases from local suppliers. What is scarce is not information but an agreed method for interpreting it. A missed utility payment, for example, may indicate financial strain. It may also reflect an unreliable billing system. Regular transfers into an account may represent income, or merely money passing through on behalf of relatives. Alternative data models promise to resolve this ambiguity by finding patterns too subtle for manual review. Yet a model can convert an administrative accident into a durable verdict. If residents of one district frequently receive delayed bills, their payment records may make the entire district appear riskier. The model may predict default accurately within historical data while quietly preserving the disadvantage that produced those records. Accuracy, therefore, is not the same as fairness, and a variable need not mention class or location explicitly to reproduce their effects. The sensible response is neither to abandon new data nor to collect everything available. Lenders should ask whether a signal has a stable connection to repayment, whether applicants can inspect and correct it, and whether the model performs comparably across groups. They should also distinguish missing evidence from adverse evidence. A person who has never used formal credit has not thereby demonstrated an inability to repay. Pilot programs that combine transaction patterns with interviews and small initial limits offer one practical approach. They permit the lender to learn while limiting both borrower exposure and institutional risk. Such systems are slower to scale than a frictionless score, but the friction may be valuable. It creates occasion to detect bad data, question convenient assumptions and prevent an efficient decision from becoming an unanswerable one. Question 26. Reading comprehension. Which statement best captures the central argument of the passage? Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Passage alternative data को ना रिजेक्ट करता है, ना complete solution मानता है। Main argument careful interpretation, model testing, correction mechanism और limited data collection को combine करना है। इसलिए ऑप्शन सी बेस्ट समरी है। Question 27. Reading comprehension. Why does the author discuss delayed utility bills in the second paragraph? Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. डिलेड बिल्स का एग्जाम्पल दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फेलियर को बोरोअर रिस्क समझा जा सकता है। मॉडल हिस्टोरिकल पैटर्न प्रिडिक्ट करते हुए एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेज प्रिजर्व कर सकता है। देयरफॉर ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 28. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Which inference about a frictionless score is most strongly supported by the passage? Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Author frictionless score को slower process से contrast करता है, जहां friction bad data detect और assumptions question करने का occasion देता है। इसलिए friction remove करने से scale fast हो सकता है, but safeguards कम हो सकते हैं। Option B strongest inference है। Question 29. Reading comprehension. In the passage, the distinction between missing evidence and adverse evidence implies that. Please check the options on the screen and determine the correct answer.
अब टाइमर शुरू होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पैसेज डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि फॉर्मल क्रेडिट यूज ना करना इनएबिलिटी टू रीपे डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। रिकॉर्ड एब्सेंट होना नेगेटिव रीपेमेंट एविडेंस के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन अ प्रिसाइज इम्प्लीकेशन है। क्वेश्चन 30। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। Which description best characterizes the author's tone? Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Author benefits और risks दोनों एनालाइज करता है, एक्सट्रीम पोजिशंस रिजेक्ट करता है और प्रैक्टिकल सेफगार्ड्स प्रपोज करता है। टोन इमोशनल या एंटी टेक्नोलॉजी नहीं, एनालिटिकल एंड कॉशियसली कंस्ट्रक्टिव है। ऑप्शन सी करेक्ट है। डेली लर्निंग कैप्सूल को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे हाई ओरिजिनल बैंक एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।